Good morning, students. Uh, Day before yesterday, we have completed chapter number 2, that is forms of business organization. Now moving towards the chapter number 3, and the name is private, public, and global enterprises. Private enterprises or private sector, both are mainly same. ठीक है, as we have already learned about private sector or private sector enterprises. There are 5 types of private sector enterprises we have completed in chapter number 2, that is the sole proprietorship, HUF, partnership, cooperative organization, and company. So these are private sector enterprises, and in this chapter we will cover the public sector enterprises and the global enterprises. Firstly, we should know what is public enterprises and the types of public sector enterprises. As we have learned in chapter number 2, कि what is public sector enterprises? That enterprises or that industry which is under the control or under the management of individual private sector companies. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि कंट्रोल मैनेजमेंट या पावर्स किसके हाथ में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में, और उनके हमने 5 टाइप्स देखे थे जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े. तो अब चैप्टर नंबर 3 में हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के टाइप्स के बारे में और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. So these are the learning objectives, or we can say these are the topics which we will be covered in chapter number 3. So here we have the introduction. Introduction is saying कि we have covered private sector enterprises in previous chapter, and in this chapter we will cover the public sector enterprises and the global enterprises. ठीक है. Here we have the next topic, that is role of private sector versus public sector since independence. So cut this topic, it is not included in your syllabus. ठीक है, it will never comes in your exams and it is not included in your syllabus. So we will not discuss this topic. And our next topic is, and here is the flow chart of Indian economy, means a mixed economy. You can see, you can read once of this chart. Here it is the chart of Indian economy. Like private sector, we have covered 5 types, है ना, sole proprietor, partnership, HUF, cooperative, joint stock company, and multinational company. Multinational company is that company which is running all over the world, means not in one country, the operations of that company is all over the world. ठीक है, किसी एक कंट्री में नहीं रहती, जिसके वर्क्स, जिसकी वर्किंग, जिसके ऑपरेशंस अलग अलग कंट्रीज़ में हो, अलग अलग कंट्रीज़ में वो ऑपरेट करती हो, उसको हम मल्टी नेशनल कंपनी कहेंगे. मल्टी मीन्स कई सारी, एंड द नेशनल मीन्स कंट्रीज़. तो दैट कंपनी विच इज़ रन इन मैनी कंट्रीज़. ठीक है, तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे. लाइक रिलायंस, कोक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी, नाइक, these are the examples of multinational company, and we have discussed all these 5. ठीक है. इन पब्लिक सेक्टर अब आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए हमने इसको चार्ट को अभी नहीं रखा है. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द टाइप्स और द फॉर्म्स of public sector enterprises. So as we learn in private sector enterprises, there are the 5 types, and in the public sector there are only 3 types of public sector enterprises. What are 3s? First is departmental undertakings. Second one is public corporation and is also known as statutory corporations. Third one is government company. ठीक है, तो
इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के तौर पे। तो फर्स्ट वी हैव द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एज इज़ द नेम दैट इज़ डिपार्टमेंटल, तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है इट हैज़ many departments. So that undertakings or that enterprises which is running in different departments is known as departmental undertakings. It is very oldest form of enterprises, means enterprises of which public sector enterprises. Public sector enterprises का सबसे oldest form जो है वो है हमारा departmental undertaking.